Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is the lesson 6 for the AutoCAD software and आज की वीडियो में हम आपको सिखाते हैं how to create doors. If you haven't taken a look over my previous session जहाँ पर मैंने दिखाया है आपको how to create a beautiful looking mini floor plan, मैंने seam to seam एक replicate किया है floor plan को. If you haven't taken a look over it, I would personally recommend you कि आप जाके देखें. मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है एंड इन द अबव आई बटन एज वेल. सो आई हैव डन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्लो प्लान विद क्रिएटिंग द ओपनिंग्स फॉर द डोर. ठीक है, सो आज के सेशन में हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल लुकिंग डोर एंड इंस्टॉल इट इनटू योर फ्लो प्लान. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. How do we create doors to install in your floor plan? Okay, first thing हम क्या करते हैं, we have this example door that I have already created. अब मैं आपको दूसरा बना के बताती हूँ. So we're going to use the tool PL, okay, and then we're going to just create a line which is going to be 0.88 meters high. And यहाँ पर हम width लेंगे इसका 0.05 meters and then the same 0.88 and then go and close it over here, forming a beautiful rectangle. ठीक है, अभी इसमें what we're going to do is we're going to use this polyline, okay, and यहाँ से we're going to create a distance of 0.835. Okay, and then this is like my line which is created. Now we're going to use a circle tool, ठीक है, to personally create this the curve that you can see. So मैं यहाँ पर ये point use करते हुए and using this particular point I'm going to form a circle. अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर there is some space over here. So now I'm going to use the extend tool, okay, and going to extend this particular line. ठीक है, ये हो गया. Now I'm going to use the trim tool and going to trim the sides of it and also trim this particular line. ठीक है, अभी now the next task over here is to form this rectangles which is going to be a jam of your door. ठीक है, so now I'm going to use the rectangle tool. I'm going to place it right over here. यहाँ पर मैं एक point place करती हूँ और नीचे you have the options of area, dimension and rotation. तो मैं यहाँ dimensions दूंगी and यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, specify the length of the rectangle and my length is going to be 0.05. Enter. Now the width of the rectangle, which is basically going to be 0.1 because maybe thickness of the wall is going to be 100 mm. Okay, so it is going to be 0.1. Okay, and gonna enter, and this is the beautiful rectangle which has been created. Now मैं यही same rectangle को मैं copy करूँगी. Okay, and now I'm gonna fit it right over here on the other side. So यहाँ पर हो गया है आपका एक beautiful door create. ठीक है, अभी हम यही सेम डोर हम यहाँ पर जाके फिक्स करते हैं. ठीक है, अभी नाउ वी कैन कॉपी द सेम टूल, बट देन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इट हैज मल्टीपल सिलेक्शन. ये एक अलग सिलेक्शन है, ये एक अलग सिलेक्शन है, ये एक अलग सिलेक्शन है. नाउ आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट ब्लॉक्स. नाउ हाउ डू यू क्रिएट अ ब्लॉक when you have this separate tools over here. ठीक है, मैं आपको वो दिखाती हूँ. So first thing what I'm going to do is I'm going to select this entire thing. ठीक है, and then going to use the keyword block, BL. ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लॉक का ऑप्शन आया है. we're going to click over this block. ठीक है, and now we have this particular block definition bar opening up and यहाँ पर मैं लिखूंगी door. ठीक है, यहाँ पर मेरा हो गया है ये door. ठीक है, and now I need to select up the specify this point over here. Okay, जहाँ पर we need to specify this base point. We're going to pick a point over here and going to use the end point of it. ठीक है, and then that's it. We're going to click OK, and now when you just select it, it selects as a whole. ठीक है, ये हो गया आपके लिए काफी ज्यादा easy. Okay, this is how you actually create a block of anything that is separated. ठीक है, now moving on, installing this particular door inside your flow plan. इसके लिए हम क्या करते हैं, we're gonna select this and we're gonna move this using the move command. ठीक है, and यहाँ पर इस तरह से जाके we're gonna fix this right over here. अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो डोर है it is extending a little. Okay, so आप ये कर सकते हो कि you can just extend this particular line, you can push this line a bit, पर मुझे push नहीं करना है. I want to edit this particular door. तो इसके लिए क्या करूँगी मैं, I'm gonna click over here. ठीक है, if you want to edit any block, how to edit any block. ठीक है, you can just click over the block and you can right click over it and you get this option of edit block in place. ठीक है, यहाँ पर edit block in place ये खुल गया आपका. ठीक है, and then we're gonna click OK and सिर्फ ये editing
हो गया आपकी सी, बाकी के सारे यू कैन सी दैट दे हैव ब्लर्ड आउट एंड सिर्फ ये डोर आपका एडिट होगा। तो इसमें व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना जस्ट पुश दिस पर्टिकुलर the jam over here to be on this particular side, okay, and the circle needs to meet over here, तो मैं यहाँ पर adjustment करूँगी and I'm gonna form the circle right like this, ठीक है। इस तरह से हमारा बन गया है, okay, and यहाँ पर what I'm going to do is I'm going to just go and click it over here, ठीक है। तो this is like a perfect looking one, यहाँ ऊपर से we're gonna do save changes, okay, gonna click okay and that's it, ठीक है। ये ब्लॉक हो गया है which has been edited, ठीक है। सो ये हो गया है हमारा एक डोर तैयार, ठीक है। एंड सिमिलरली वी कैन क्रिएट द डोर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द हाउस, द रेस्ट ऑफ द फ्लोर प्लान एंड या योर डोर सेशन विल बी डन, ठीक है। इट वॉज ईजी राइट। तो अभी हम ये बाकी के डोर्स भी हम बनाते हैं, क्विकली बनाना स्टार्ट करते हैं, बट अभी आपको फिर से दोबारा से बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू गोना डू इज यू गोना सेलेक्ट दिस, ठीक है, कॉपी करो आप इसे, ठीक है, एंड ब्रिंग इट राइट ओवर हियर एंड आई नीड टू रोटेट दिस 90 डिग्री बिकॉज यहाँ पर है आपका राइट। सो एज अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आपकी डोर ओपनिंग इस तरफ है राइट। तो हम डोर ओपनिंग्स भी करते हैं एंड आपको पता है, आप देख रहे हो वहाँ पर कि डोर एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं। सो वो डोर एंगल किस तरह से डिफरेंट है मैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं, ऑफ हाउ टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ डोर एज वेल, ठीक है। तो हम अभी यही डोर इस्तेमाल करते हुए वी कैन मूव ओवर इट, रोटेट करते हैं हम एट 90 डिग्रीज, ठीक है। आई एम गोना रोटेट दैट एट 90 डिग्री, ओके, और इसी चीज़ को वी कैन मूव एंड या ओके मैं यहाँ पर देखो ये अलाइंड है, तो मैं ये बंद कर रही हूँ यूजिंग माई F8 की बटन ऑन माई कीबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं टच, ठीक है, परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोना डू द वेरी सेम थिंग ओवर हियर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसका इट्स सपोज टू बी ऑन द अदर साइड, ऑपोजिट साइड, तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीका यूज करूँगी टू मिरर दिस, ठीक है। सो आई एम गोना क्लिक ओवर दिस, गोना यूज द कीवर्ड मिरर एंड या बस इसी तरह से एंड F8 ओपन कर लो स्ट्रेट आने के लिए एंड या ओके आई एम सॉरी, ओके सो यहाँ पर मैं ये क्लिक करूँगी, मिरर कमांड यूज करूँगी, गोना मिरर इट, क्लिक एंटर एंड या ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इट हैज़ बीन मिरर्ड, ठीक है। नाउ अभी मुझे पता है कि ये ओपनिंग ये डोर साइड इज ऑन दिस साइड, तो अभी दोबारा से क्या करेंगे, फिर से मिरर करेंगे इसी सेम चीज़ को, ठीक है, एंड गोना मिरर दिस, ठीक है। एंड यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो ओके मिरर एरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ये सोर्स ऑब्जेक्ट है, डू यू वांट टू एरेज इट, यस आई एम गोना क्लिक यस एंड या दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरे पास मिल गया, आई एम गोना मूव दिस टूवर्ड्स द कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पर लाके आई वुड अटैच दिस, see how simple is that। and now lastly we need to create the door for this particular size, ठीक है। तो अभी हम वही सेम करेंगे, यहाँ पर I already have this, so what I'm going to do is I'm going to mirror this, okay। always look out for shortcuts, ठीक है, हमेशा shortcuts देखना बहुत ज़रूरी है just to make your task much easier, ठीक है। now यहाँ पर I'm going to move this, okay, I'm going to select move, going to select one point, आपको एक point select करना लाजिम है, go select it and place it over here, simple, easy है ना ये, ठीक है। सो दिस हैज मेड योर टास्क मच 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 इजियर इजंट इट राइट। सो अभी हम फर्दर हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे इन टच एंड आई होप यू हैव loved watching my video, I hope those were very informative for you too, and yeah I'm really looking forward to teach you further, do like my video, subscribe my channel and do share it with your friends too so that उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा helpful रहेगा। Stay in touch and I'll be back with my new video, till then take care and bye bye।